क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2x minus 5 raised to 3 by 2 minus 7 upon root x. As always, पहले इस फंक्शन को हम नाम असाइन कर देते हैं y. Let y be equal to 2x minus 5 raised to 3 by 2 minus 7 upon root x. And now we differentiate with respect to x. So we get dy by dx is equal to, अब पहले हम डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट टर्म का, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x minus 5 raised to 3 by 2 minus 7 तो कोएफिशिएंट है, तो 7 times डेरिवेटिव ऑफ 1 upon root x. अब ये जो 1 upon root x है, इसे हम लिख सकते हैं as 1 upon x raised to half. एंड अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये हो जाता है x raised to minus half. तो 1 by root x को हम रिप्लेस करेंगे x raised to minus half से. तो पहले वो स्टेप हम कर लेते हैं. So here we have derivative of 2x minus 5 raised to 3 by 2 minus 7 times derivative of x raised to minus half. Now in the first part, यहाँ पर हम यूज करेंगे chain rule, that is derivative of fx, because यहाँ x term नहीं है, you have a function in x. So derivative of fx raised to n, इसका डेरिवेटिव होता है n times fx raised to n minus 1 into derivative of fx. तो यहाँ पर जो fx है वो है 2x minus 5. So this will be n times, that is 3 by 2 into 2x minus 5 raised to 3 by 2 minus 1, right? N times fx raised to n minus 1 into derivative of fx, that is into derivative of 2x minus 5 minus 7 into, अब यहाँ x raised to n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, so this will be minus half x raised to minus half minus 1. Now further if we simplify, ये आ जाता है 3 by 2 times 2x minus 5. यहाँ डिनोमिनेटर इक्वलाइज करते हैं, so 2 ones is 2, so 3 minus 2, that's 1. So 1 by 2 into, अब इसका डेरिवेटिव 2 into डेरिवेटिव ऑफ x is 1, तो पहला टर्म तो आ जाएगा 2. 5 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0. So टोटल डेरिवेटिव वैल्यू is 2. अब ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 7 by 2 x raised to, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर इक्वलाइज करते हैं, so minus 1 minus 2, so that's minus 3 by 2. Now this 2 cancels with this 2, so we have 3 times 2x minus 5 raised to half plus 7 upon 2 into x raised to minus 3 by 2. So this is the value for dy by dx.